माय नेम इज केटी चैनल में आने के लिए आपका यार मैं पर को बोलता Few moments later. बता चल रुक जा। 3 days later. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज केटी चैनल में आपका वेलकम। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो कुल्फी नारियल। तो आप ज़रूर देखिए और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हम मैंगो लेंगे और थोड़ी सी हम अमूल क्रीम ले लेंगे, कोकोनट ले लेंगे और 1 टीस्पून हम कॉफ़ी पाउडर ले लेंगे, शुगर एंड मिल्क जरूर होना चाहिए। तो हम मैंगो कट करेंगे। जब ऐसे स्लाइस बचा है तो आप उसको घर में खा सकते हैं। मैं तो बहुत खाती हूँ। तो मैंगो कट गए हैं, इससे आप मसाज भी कर सकते हैं अपने फेस की। तो मैंगो हम सॉफ्ट कर लेंगे तो प्लीज हैंड वॉश करते रहें, लॉकडाउन है, कोरोना है। तो हम एकदम निकाल लेंगे इसको। हम थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हैं इसमें थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे ताकि मैंगो हमारा अच्छे से निकल जाए। तो मेरा फेवरेट तो इसको इतना स्मूथ कर लेंगे। तो हम मिल्क ऐड कर लेंगे। तो स्मूथ हो गया तो हम इसमें कोकोनट ऐड करेंगे। कोकोनट के बाद हम अमूल मिल्क क्रीम, अगर आपके पास अमूल मिल्क क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी ले सकते हैं, घर की मलाई टेस्टी होती है घर की मलाई। तो मलाई डाल दूँ अच्छे से, इसको भी मिक्स कर दे अच्छे से। फिर आप कॉफ़ी पाउडर ले लें। कॉफ़ी पाउडर से ये कि इसमें टेक्सचर अच्छा आएगा।
तो अब हम शुगर ऐड करेंगे। तो आप कुल्फी के लिए छोटा गिलास भी ले सकते हैं आप अपने घर में, क्योंकि अभी लॉकडाउन में मेरे पास है नहीं कुल्फी के लिए कुछ भी। तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। हमारे पास कुल्फी स्टिक भी नहीं है तो उससे हम टूथपिक यूज़ करेंगे। तो ऐसे हम रख देंगे फ्रीजर में। और अब हमारा मिक्सर ज़्यादा है तो मेरे पास छोटा गिलास एक ही है और बाकी बड़े गिलास से तो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ इसको। तो हम घर में फ्रीजर में हम इसमें भी आइसक्रीम गाइस आइसक्रीम अभी टाइम लगेगा, तो जब आइसक्रीम बन जाएगी तो आपको दिखाएंगे आइसक्रीम कैसी है हमारी आइसक्रीम। तो आप ट्राई जरूर करिए। Few moments later. मेरी आइसक्रीम बनाई हो तैयार हो गई दीदी। दीदी आपने मेरी आइसक्रीम बनाई हो तैयार हो गया। आ जाओ। ओके आ जाओ। आइसक्रीम तैयार हो गई। ये लो आइसक्रीम तैयार। वाओ नाइस। हैप्पी ब्रदर डे। हैप्पी दीदी। हैप्पी। ये है